Okay, Sam. Staff has sent me an answer. Waiting for others. Hanifa, Heba, Aaron, all of you have my number, right? Please send the answer. Okay. Also raise your hand if you're stuck. You should not be stuck at this question. But even if you're stuck, please raise your hand. अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो, because this is from class 11th. Please don't take too much of time, है ना? या तो raise your hand if you're stuck or send the answer. I will give you one more minute. Waiting for Al and Hanifa and Hiba. Okay, Alan, I think this is you, right? Yes, sir. Yeah. Okay. Saif and Alan have given different answers. And their answers are different. Okay, chali. N gives you the principal quantum number, the shell number, right? And L, it gives you the subshell. Now, what are the values of L? L can be 0, 1, 2, 3, 4, and 5, so on. S, P, D, and F. So when N is equal to 2, L is equal to 1, this will be 2P. 3 and 2, this will be 3D. 3 and 0, this will be 3S. 2 and 0, this will be 2S. अच्छा, okay, fine. Options में कुछ गलती है यहाँ पे. One of the option will be 2S, है ना? One of the option will be 2S. अच्छा, ठीक है. Now it depends. So the correct options could be A3, 4, 2 and 1. हाँ, A और B में से अगर किसी को भी आपने choose किया, that means it is correct. Okay. So there is there's a typing mistake here, है ना? 3S and 3S. एक कोई 2S होना चाहिए था. ठीक है? This is 2P, 3D, 3S and 2S. I hope this is correct for all of you guys. चलिए. Try this one. Now this is regarding N plus L rule. So the orbital with larger value of N plus L is going to have greater energy. And if N plus L is equal to same, then you are going to compare the principal quantum number, and whose principal quantum number is greater, it will be having the greater energy. Okay, Alan has answered. Okay, Farhat is here now. So late. I'm waiting for your answers. What happened? Hanifa and Heba, आप लोग answers नहीं कर रहे हैं? Yes, Hanifa. Yes, sir. Okay, you will answer. No, sir, I did not know the answer. You did message me? I did not know the answer for that. अच्छा, you did not know the answer. What about this one? ये कर पाएंगे? अच्छा, it's not a problem. Okay. Farhat and Aksa, you guys are 15 minutes late. I hope all of you are getting the time as 2:15. 2:15 में classes start हो जाती, right? 2:15 PM. से. Indian time is 4:45 PM. Okay, so please be on time, Aksa and Farhat. We are doing atomic structure, and in atomic structure, we are doing the quantum numbers portion. So please start.
Take this question. हिबा, what about you? ये सवाल हो जाएगा हिबा? Okay, हिबा has answered. Okay. Saf, what happened? Saf ने answer नहीं किया. चलिए see. Let us see here. What is n plus l? Saf ने okay, fine. N plus l क्या है? N is the principal quantum number. That is 6, 5, है ना? All of these things. 4d, 5p, 5f, and 6p. These are the principal quantum numbers. Okay, and they are asking you to arrange them in the decreasing order of their energy. So 4d का क्या हो जाएगा? 4d will be 4 plus d का कितना होता है? 3 या 2? 2 ना? So this will be equal to 6. Then 5p. 5p is equal to 5 plus 1. This is equal to how much? 6 again. Then we have 5f. 5 plus 7, right? So the greatest energy will be with which one here? 5f. 5f में b और c option है. Then 6p same है. Then 4d और 5p में किसका ज्यादा energy होगा? Since we have the same n plus l, then you will look at the value of n. किसका n बड़ा है? 5p का n बड़ा है. So 5p will be having greater energy. So this c is the correct option. All of you understood this one, please tell me. Aksa and Farhat, आप लोग के आंसर नहीं आए, so yes, I'm asking. Okay, Aksa and Farhat, can you please turn your mic on? Yes, Aksa. Yes, sir. Do you have my WhatsApp number? Yes, sir. अच्छा, so please जो भी ABCD आंसर है ना वो आप हमको WhatsApp में भेजिएगा. Zoom का चार्ट इस अकाउंट के लिए पता नहीं क्यों अच्छा नहीं है, ठीक है? What about you, Farhat? Yes, sir. You also have my number. Okay. Yes, sir. Try this question. How many electrons can fit in the orbital for which n is equal to 3 and l is equal to 1? 2 minutes for this question, not more than 2 minutes. Last question सबका सही था. Alan, Saf, and Hanika, very good. Okay, Alan. Okay, Hanifa, Alan, and Saf, all of you have answered. They have told you the orbital n is equal to 3 and l is equal to 1. This will be 3 and l is equal to 1. कौन सा subshell आएगा? So how many electrons will be there in that subshell? Just convert it to okay. 3 means 3. L is equal to 1. तब होता है yes. What's the meaning of L is equal to 1? Which subshell is this? Farhat, which subshell is this? Also, Maimuna, you have to send answer on my WhatsApp. Zoom chat is not working. Okay, Maimuna? Yes, Maimuna? See here, guys. Farhat, tell me what is L is equal to 1 ka matlab? What's the meaning of L is equal to 1? Yes, Farhat, tell me. What's the meaning of L is equal to 1? Number of cells. नहीं, चलिए ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए. आप लोग लेट आई हैं एक तो, है ना? मैमूना ऑल्सो 2:15 में क्लास स्टार्ट हो जाती है. ओके, प्लीज सी योर व्हाट्सएप मैसेज. 2:15 कैसे पे क्लास स्टार्ट हो जाती है. प्लीज डोंट बी लेट. सी, प्लीज राइट दिस डाउन. द वैल्यू ऑफ एल एंड द सबशेल.
वैल्यू ऑफ एल 0 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए क्या हो जाएगा F, 4 के लिए क्या हो जाएगा G। ठीक है। नाउ L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ 3p। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर इन 3p? p सबसे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट? सो वी हैव 6। चैट ऑप्शन, जस्ट अ सेकंड गाइस, चैट तो नहीं आ रहा है। नहीं, चैट भी नहीं आ रहा है। राइट दिस। Send your answer to me WhatsApp. Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? I hope you remember there are two types of d orbitals. There are axial d orbitals and there are non-axial d orbitals, है ना? एक क्या होते हैं? Axial होते हैं और एक क्या होते हैं? Non-axial होते हैं. Now they're asking which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis. The axial d orbitals के बारे में पूछे. What are the axial d orbitals? What are the axial d orbitals? चलिए ठीक है. If you are not answering, that means याद नहीं है आप लोगों को. Axial d orbitals there are two, the dz square and dx square minus y square. ठीक है. x square minus y square नहीं होता, x square dash x y square बोलना चाहिए इसको, but it is written as x square minus y square. The non-axial one as dxy, dyz and dzx. There are 5 d orbitals. उसमें से axial कौन से है? Square वाले. So where are the square ones? dz square, dx square minus y square. That is the C answer. ठीक है. Correct option is C. Please write this thing down. D दो टाइप के होते हैं, axial and non-axial. Axial one will have the electron density along the axes only. Non-axial one का कहाँ पे होता है? Between the axes. They are like this. The non-axial d orbitals are like this, and the axial d orbitals, dz square जो होता है, that is like this, and it is having a ring on the plane of xy. dx square minus y square is simply like this. This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis, and this is, you can say, x-axis or y-axis. Please write this thing down. Try this question, giving you 2 minutes. थोड़ा सोचने वाला सवाल है. Okay, sir. Okay, Hiba. Yes, correct, Alan. Hiba का भी सही है, सैफ का भी सही है. Alan, your answer is also right. What happened? बाकी लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं. फरहत, अक्सा, मैमूना also you're not answering. Sir, I messaged you. You messaged? अच्छा, this is your number. Okay, okay. Yeah, that is correct. Yeah, okay, correct. Got it. And I think this is Aksa. Yes, Aksa, correct. Very good.
आयलन का आंसर नहीं आया इसमें। सी मैग्नेटिक क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इट इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द शेल्स। ठीक है, अलग अलग शेल्स के बारे में बताएगा। देन व्हाट डू वी हैव एजीमुथल क्वांटम नंबर? इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब शेल्स। पी है, एस है ना, सब शेल। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा आपको किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में। And spin quantum number will tell you about the spin of the electrons, and it is going to distinguish between different electrons. So इसको भी लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन भी आपके लिए जरूरी है। Azimuthal quantum number tells about subshell, spin quantum number tells about the two एक सेकंड, इसको ऐसे लिख लीजिए, electrons in an orbital, ठीक है, shells in an atom, एक एटम के अलग अलग शेल के बारे में बताएगा, एंड सबशेल्स इन अ शेल, एक शेल में अलग अलग जो सबशेल होते हैं उसके बारे में बताएगा, एंड ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। I hope all of you have wrote this. Done everyone? Yes or no, please tell me. 1 minute, sir. 1 minute, okay. Take your time. Let me know once you're done. Yes, sir. Done. Write this question. इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को थोड़ी थ्योरी चाहिए होगी। ठीक है, so please write this. Orbital angular momentum this is equal to under root L into L plus 1 under root L into L plus 1 multiplied by H upon 2 pi multiplied by H upon 2 pi। ठीक है, अच्छा H upon 2 pi को और क्या लिख सकते हैं? H क्रॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आइदर ये लिख सकते हैं आप H क्रॉस इंटू रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। व्हाट इज L हियर? L है आपके पास यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इससे एक और सवाल आया था जिसमें H क्रॉस के टर्म्स में दिया हुआ था, तो दोनों फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। अब ये मत इसमें लड़ाई मत कीजिएगा, H क्रॉस यहाँ पे आएगा या फिर इट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड, बोथ यहाँ लिखिए आप, चाहे आप यहाँ पे लिखिए, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग। बस ये ध्यान रखिएगा, इट इज मल्टीप्लाइड बाय H क्रॉस जो है रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, दिस इज सेपरेट थिंग। So what will be the orbital angular momentum for a p electron? What is the value of L for p electron? उसको लिख लीजिए and then you will get the answer. Send your answer on WhatsApp. Hmm.
We have got two answers till now. Farhat and Saif have answered till now. See here, guys. What is the value of L? Tell me, guys. जल्दी बताइए. Aksa, Hanifa, others, tell me. 1. What is the value of L? क्या है? 1 है ना? If the value of L is 1, just plug in the values here. So the angular orbital angular momentum will be equal to 1 plus 1 under root. No, sorry, 1 into 1 plus 1 divided by into h into 2 pi. So this will be what? 2 into 1, that is equal to root 2 h upon 2 pi. Root 2 and 2 is going to cancel each other, and you will get h upon root 2 pi, which is the option A. Try this question. The number of d electrons in Fe2 plus, I hope 2 plus, if you're writing 2 plus, that means you're removing 2 electrons, is not equal to the number of electrons in which one of the following. नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ध्यान रखिएगा. I will give you, think about it in 1 minute, and then let me know if you don't understand the question कि किस तरह से करना है. चलिए, please see here. So Fe2 plus में what is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, then school, 3s2, 3p6, 3s2, and then So 4s2, right? 4s2 and 3d6, right? 4s2 में से ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. This will become 4s0. So the number of d electrons is equal to how much? Number of d electrons is equal to 6 है, ठीक है? Number of d electrons in this case it is equal to how much? 6. अच्छा, d electrons in Fe क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d6. Here also the d electrons is equal to 6. Next देखते हैं neon में. It is 1s2, p electrons in neon, 1s2, 2s2, 2p6. ठीक है? तो यहाँ पे number of p electrons भी कितने आ गए? 6 आ गए, right? Number of p electrons is equal to also how much? This is equal to 6. S electrons in magnesium. So you will have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So number of s electrons is equal to 2 plus 2 plus 2. That is also going to give you 6. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. C वाला केस समझ में आया? अक्सर आपको समझ में आया C वाला?
Here also we are having Yes, six sir. s electrons. No? We have 6 electrons in the S subshell. So obviously the answer is going to be chlorine, that is, because बाकी सब में तो 6 इसी में नहीं होगा, है तो 1s2, 2s2 इसको देख लेते हैं, 2p6, 3s2, 3p, how much? 3p, how much? 5. 3p5. So the total number of p electrons is equal to how much here? 6 plus 5. ये भी p है and this is also p, right? So you have to count both of them. 6 plus 5, that is also going to give you 11. This is not equal to 6. Okay, so D will be the correct option. Please write this down. Can I move on? 1 minute, sir. Okay. Saif, let me know once you're done. Done, sir. Try this. What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? Okay, so please see here. N is equal to how much? 3. L is equal to 1, that is 3p. L is equal to 0, है ना? P में आपके पास जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होगा -1, एक होगा 0 और एक होगा क्या? +1. Because L is equal to 1. What are the values of ML that can take this? -L2 plus L. So ये 0 में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? बस एक ही ऑर्बिटल आ रहा है, right? So the correct option is going to be 1. Please let me know now अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो. If you want to revise this concept a bit, then please let me know now. So what does this -1, 0, and +1 represents? There are different levels of information that we can get about the position of an electron, the address of an electron. As you know,
principal quantum number n, it tells you about the shell number, right? Yes, Shell sir. number. Then we have L, that is the azimuthal quantum number. Now, for each value of n, that means हर एक shell में there will be some subshell. Okay, so this is subshell. Shell number and इनकी values क्या हो सकती है? This can be 1, 2, 3 and so on. Okay, now you have subshell. Now each shell, यानी कि first shell में कोई subshell होगा, second shell में कुछ subshell होगा, third shell में कुछ subshell होगा. Now how many subshells will be there and what will be those subshell? It is given by n minus 1. For example, let us suppose I am taking, let us कोई पूछ रहा है आपसे कि n subshell और n की value दी हुई है 2 and what are the subshells in the second shell? तो you will write n minus 1 नहीं, इसको ऐसे लिखना ज्यादा बेहतर होगा, 0 to n minus 1. Okay, now second subshell will have 0, then it is going to have n minus 1. कितना होता है आपके पास? n minus 1 will be equal to 2 minus 1, that is equal to 1. तो 0 से लेके 1 तक सब कुछ होगा आपके पास. 3 में अगर हम बात करें, what will be the number of subshells which will be present in the third shell? So I will calculate n minus 1. n minus 1 will be equal to 2. तो 0 होगा, 1 होगा and 2 होगा in the third shell. Now, when we go to m, that is the magnetic quantum number, this tells you about the number of orbitals in each subshell. ठीक है, जैसे मान लीजिए I was in the third shell. Third shell में हमारे पास subshell होंगे 0, 1 and 2. 0 होगा हमारे पास, 1 होगा हमारे पास and 2 होगा हमारे पास, right? Now, m is going to tell you about the orbital and the acceptable values for the orbital is what? Minus L to plus L. That means for each subshell minus L to plus L. तो 0 के लिए 0 क्या आपका subshell 1 है, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा? सिर्फ 0, because minus और plus तो होता नहीं है 0 का. Now, for first subshell, that means for p subshell, what will be the values? Minus L, that means minus 1, 0 and plus 1. These are the values for m. 2 के लिए क्या क्या values हो जाएंगी? Minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. कुछ याद आया सर? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Okay. Moving on. Try this question. Identify the incorrect statement from the following. All 5 5D orbitals are different in size when compared to the respective 4D orbitals. All 5 4D orbitals with have shapes similar to the respective 3D orbitals. In an atom, all 5 3D equal energy in free state. The shapes of dx are similar to each other and dx are similar to each other. Okay, Alan has answered. Incorrect statement बताना है आप लोग को. Okay. What is the incorrect statement? And also please differentiate कीजिएगा size की जहां पे बात आए और shapes की जहां पे बात आए. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. कहाँ size लिखा हुआ है और किसके लिए shape लिखा हुआ है. Okay, so देखिए आंसर है सी. As you go from 3D to 4D to 5D, what is increasing here? What is increasing here? The shell number is increasing. And if you are having a larger shell, then obviously the subshells will also be large. So what is it? What will be the difference between them? 3D, 4D and 5D में? The difference will be in the terms of size. ठीक है? And shape क्या होगा? Shape will be same. Shape will be same. Why the shape will be same? Because all of these are d orbitals. और shape के बारे में कौन बताता है आपको? Azimuthal quantum number. And अगर d के बारे में बोल दिया, then all the d subshells are same. अगर s के बारे में बोल दिया, then all the s subshell of any shell will be same. ठीक है? So shape will be what? Shape will be same. Size will be different. Incorrect statement देखते हैं. All 5 5d orbitals are different in size when compared to respective 4d orbitals. Yeah, this is correct. Statement is correct.
all 5 4D orbitals have shapes similar to respective 3D orbitals? Yes. Shape क्या होता है? Same होता है, और size क्या होता है? Different होती है, ये भी सही है. In an atom, all 5 3D orbitals are equal in energy in the free state. That is also true, because the d orbitals in the d subshells will be having what? Same energy. उसी को क्या बोलते हैं? Degeneracy बोलते हैं. They will have same energy. So बचा last option यही सही होना चाहिए. The shapes of dxy, dyz and dxz orbitals are similar to each other. That is true. And dx square and dz square are similar to each other. No, this statement is not right, because dx square minus y square is having shape something like this, and dz square is like this. So obviously these two shapes are not similar. So D is the correct option and the incorrect statement. Okay, right, next. Which one is the wrong statement? Total orbital angular momentum of electron is in s orbital is equal to 0. An orbital is designated by 3 quantum numbers, while an electron is designated by 4 quantum numbers. ठीक है, फिर से wrong statement बताना आपको. The electronic configuration of nitrogen atom is like this. The value of m for dz square is equal to 0. इसमें से what is the wrong option? Yes, Hiba and Saf, very good. Correct. See here, guys. The total orbital angular momentum, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, under root of L into L plus 1 into h upon 2 pi. So obviously if L is equal to 0, because S orbital azimuthal quantum number is 0, so this value will be 0 multiplied by anything will be equal to 0. So this statement is correct. An orbital is designated by 3 quantum numbers. Yeah, that is true. When you see an orbital, for example, अगर आप बात कीजिए p orbital and this is third 3p, this is -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, right? So what we can say that 3 p के लिए क्या हो जाएगा 1 and let us suppose 0. So these are the 3 quantum numbers which is designating the orbital. If you add an electron, अगर आपने half spin में दिया है तो plus half हो जाएगा. So this 4 quantum numbers are going to tell you about the electron. So this statement is also correct. Let's look at this one. The electronic configuration of nitrogen atom is 1s2, 2s2, 2p3. ठीक है, 2p3 how they have filled, that is important. They have filled up, and down. Now this is not right. Right? What does the Hund's rule of maximum multiplicity say? It says that the pairing of electron will not take place until and unless each orbital of a subshell is singly occupied with the same spin. पहले कैसे occupy करना चाहिए? Singly occupied with the same spin. Now this spin is different. That is why we will say that this C statement is a wrong statement and hence it is the correct option. Statement is wrong and the option is correct. Yes, Farhat, very good. Correct.
All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Aksa, Hanifa, Saif. Yes, sir. हनीफा आपको समझ में आ रहा है? यस हनीफा, आंसर Yes, नहीं है sir. ना? अच्छा, कुछ आंसर किया है आपने, ठीक है, ओके। चलिए, Be2 plus is isoelectronic with which one of the following? ठीक है, सी दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन हम आपके पास दिमाग में ये लाना चाह रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कोई सवाल आ सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक सवाल नहीं इंपॉर्टेंट है, बट आई होप कि आपको समझ में आए कि किस तरह से सवाल आता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कोई सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए, बेरिलियम 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बेरिलियम 2 plus will have how many electrons? ये तो काफी जल्दी आंसर, ये तो सबका आंसर आना चाहिए इसमें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यस हनीफा, वेरी गुड, करेक्ट। Yes, Fahad, very good, correct. See, Be2 plus is going to have only 2 electrons. H plus में कितना होगा? 0। लिथियम प्लस में कितना हो जाएगा? लिथियम में होता है 3, एक निकाल दीजिए, बच जाएगा 2। So the correct option is B. B2 plus also has 2 electrons. B में होते हैं कितने? Originally कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 निकाल दीजिए, it will now have 2 electrons. चलिए, moving on. A particular station of audio radio in New Delhi broadcast a frequency of this much kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is how much? ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा? देखिए, all of the following questions, E is equal to h nu, which is equal to h c upon lambda. तो what हम क्या लिख सकते हैं? Frequency is equal to c upon lambda. ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने? लैम्डा पूछा है, राइट? सो लैम्डा विल बी इक्वल टू हाउ मच? c अपॉन फ्रीक्वेंसी। c is the speed of light. I hope all of you know. कैलकुलेट कीजिए इसको। 3 into 10 to the power 8 होता है, ठीक है, speed of light, and the frequency that they have given it is equal to 1368 kilohertz, right? तो 1368 into 10 to the power 3 भी होगा, because हर्ट्ज हम लोग लेके चलेंगे, पर सेकंड हर्ट्ज का मतलब होता है। ओके, सो कैलकुलेट दिस टर्म।
Okay, Saf has answered. यहाँ पे आप लोगों को ना बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दैट यू कैन नॉट अप्रोक्सीमेट बिकॉज 219.3 219.2, ठीक है, एंड 2192 21.92 अप्रोक्सीमेशंस के यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। ये सवाल किस नहीं पता आपको? ये इस सवाल में इस तरह के सवाल आएंगे ना, ठीक है, जहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा रहती है तो क्या करना है, छोड़ देना है, सारे सवाल नहीं करने होते हैं, ठीक है? ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा सवाल है जिसको छोड़ना है। ओके, इस सवाल को करना ही नहीं है, प्लीज रिमेंबर, सवाल को करना ही नहीं है। So if you divide both of these 3/1368 आपको मिलेगा आंसर 2.19298 and so on into 10 to the power -3, ठीक है, into 10 to the power 8 है और divided by 10 to the power 3. So 10 to the power 3 and 10 to the power -3 is going to cancel each other out. कैंसिल करेगा दोनों? नहीं कैंसिल करेगा, नहीं बात, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा ये दोनों, rather it will become 2.19 2.192 को क्या लिख सकते हैं, 2.19 फिर लिख सकते हैं। अब यहाँ तक आ गए आप, that means the correct option is going to be B, है ना? Because 10 to the power -3 here, it is go above and it will become 10 to the power 8 into 10 to the power -6, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 10 to the power 2, तो हो जाएगा 219.3, 2 डेसिमल पॉइंट। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बट यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, टाइम मिले तो फिर इसको अच्छे से कैलकुलेट करके बिल्कुल लिखना है, बिकॉज एंड यू कैनॉट अप्रोक्सीमेट, ऐसा नहीं कि 192 आगे छोड़ दिया आपने, आपको अगला डिजिट देखना ही पड़ेगा। ओके, आई थिंक सैफ एंड परत दोनों ने यही गलती की है कि 2.192 आया, उन्होंने 2.192 वाला मार दिया आंसर, ठीक है? सो यू हैव टू सी द नेक्स्ट डिजिट, ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे हुआ है। कैलकुलेट दिस वन, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। इसमें क्या यूज करेंगे, 45 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया है उन्होंने, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एंड आई थिंक इफ यू जस्ट कैलकुलेट दी, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको इसका करना पड़ेगा, ठीक है? एक्सपोनेंट्स का कैलकुलेशन कीजिए सही सही से एंड यू विल गेट द आंसर बिकॉज ऑल द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट हियर। एक्सपोनेंट्स को सही से कैलकुलेशन कीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। I'm giving you guys 2 minutes for this. Yes, Saf, correct. Very good. Correct answer.
Yes, Fahad, correct. H is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 into C is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by lambda, that is equal to 45 into 10 to the power minus 9. अब यहाँ पे हम करते हैं 6.63 into 3 divided by 45. 6.6 into 3 आपका लगभग approximately equal to 1920 के करीब आएगा ये, ठीक है. 6.63 into 3 will be equal to somewhere around 1920. ठीक है, तो this value is going to be in decimals, है ना. चलिए ठीक है. Into 10 to the power minus 34 into 10 to the power 8 and minus 9 will go above, it will become plus 9. So 9 plus 8 will be equal to 70. ठीक है. Now हम इसको लिख सकते हैं कितना, 10 to the power minus 17. ठीक है. Now this is 0 point something यहाँ पे आंसर आएगा. ठीक है, because this numerator is small and this is big. 0 point कुछ हम क्या करेंगे, लेते हैं इसे. ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी कुछ यहाँ पे डेसिमल होगा, पॉइंट समथिंग होगा. ठीक है, जस्ट जब हमारे पास जितने भी आंसर दैट इज सम नंबर देन पॉइंट, then this 10 to the power 17 will become how much, 10 to the power 18 minus 1, because आपने 1 ले लिया तो 1 माइनस बढ़ जाएगा. The correct option is going to be D. इस सवाल को हम लोग लिख लीजिए. ठीक है, दिस अगेन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पूछा है इन्होंने, नैनोमीटर. ये मिलीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा. ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह. चलिए, I hope you have taken the screenshot for this. ये सवाल कीजिए, this is a bit easy question. E1 and E2 of two radiations 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelengths lambda 1 and lambda 2 is equal to how much? किसी का आंसर आया है? Yes, Farhat, yeah, correct, Farhat. That is correct. Yes, Saif, correct. E is equal to hc upon lambda. That means E is inversely proportional to lambda. जिसका E बड़ा उसका lambda छोटा. ठीक है, that means E1 E2 इस तरह से, करेक्ट. E1 is less than E2, तो lambda 1 क्या हो जाएगा, will be greater than lambda 2. और ये केस कहाँ पे बन रहा है आपके पास, when you have, है ना, twice है, the difference is of twice, तो twice का difference आएगा. I can write lambda 1 will be equal to 2 lambda 2. Option B. Please write this down.
चलिए, सी है बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना, इससे कुछ सवाल आए हुए हैं, आई थिंक 2 क्वेश्चन आए हैं, इससे 2-3 सवाल आए हुए हैं, ठीक है, तो प्लीज सी है थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द रेडियस ऑफ एन एटम, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, रेडियस ऑफ एन एटम, एंड दिस इज फॉर नॉट ओनली हाइड्रोजन एटम बट एनी एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया इट शुड हैव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर हीलियम की बात करें तो He प्लस के लिए दिस इज गोइंग टू बी वैलिड, then if I talk about lithium, then lithium 2 positive is going to be valid, ठीक है, और this equation is valid for all of these hydrogen atom or hydrogen like atom. Now Rn is equal to 0.529, this is a constant into n square, n square means जो भी जिस भी शेल नंबर के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, थर्ड शेल का निकालना है आपको, फोर्थ शेल का, फिफ्थ शेल का, जिस भी शेल नंबर का निकालना रेडियस, आपको उसका रेडियस मिल जाएगा, डिवाइड बाय z, z is the atomic number, ठीक है, तो atomic number will be different for hydrogen, helium, lithium, beryllium and so on, okay. Now there are 2 other things that you have to keep in mind. Radius of an orbital will be directly proportional to the n square, the square of the orbital number or the shell number, ठीक है, एक ऑर्बिट का रेडियस किसके बराबर होगा, it will be directly proportional to the square of the orbit number and inversely proportional to the atomic number या number of protons. Now for a same cell, for a same atom, radius of one orbit divided by radius of another orbit will be equal to the radius of first orbit and second orbit का square, ठीक है, तो the ratios क्या हो जाएंगे इसके, इस तरह से हो जाएंगे Rn1 upon n2 का whole square, ठीक है, because Rn is equal to R naught, एक कोई constant into n square upon z for the same atom, this is only for same atom. When you are going to have different atom, तो different atom में क्या और change होगा, atomic number change होगा, so we have to consider atomic number also. So Rn1 upon n2 will be equal to n1 upon n2 का square, क्योंकि directly proportional है, and z2 upon z1 because it is inversely proportional, ठीक है, this is for different atoms and the above is for same atoms, right. Next, energy of different electrons, energy of electrons in different shells, energy of electron इसको आप लिख लीजिए -13.6 into z square upon n z square, n2 square या फिर आप n z square लिख सकते हैं, and also it is talking about the energy absorbed and the energy released, ठीक है, दोनों ही चीजों के बारे में, एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इट इज हैविंग दिस मच एनर्जी, एंड इफ यू हैव इन n1, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन, 3 से 4 भी जा सकता है, 4 से 2 भी आ सकता है, 2 से 6 भी आ सकता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट, हियर n1 इज व्हाट, द स्मॉलर वन, एंड n2 क्या है आपका, लार्जर ऑर्बिट है, okay, so delta change in energy will be equal to hc upon lambda, and this is going to be equal to 13.6 z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. n1 में कौन रहेगा हमेशा, n1 में हमेशा रहेगा आपके पास, n1 में हमेशा रहेगा आपके पास कौन सा, it will be the smaller one, and n2 में कौन रहेगा हमेशा, larger one. The only difference will be when you have emission and when you will be absorbing energy, ठीक है, emission और absorbing में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के लिए आपको क्या लगाना, सेम फॉर्मूला लगाना, इफ इट इज एमिटिंग आल्सो तो स्मॉलर से लार्जर कीजिए, एंड इफ इट इज एब्जॉर्बिंग आल्सो देन आल्सो स्मॉलर से लार्जर कीजिए, बिकॉज दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द चेंज इन एनर्जी, तो प्लस माइनस से कोई यहाँ पे टेंशन नहीं रहेगा, ओके, सो h की वैल्यू है 6.626 into 10⁻34 joules per second, and if they want to convert this electron volt, है ना, all of these things are in electron volt, अगर electron volt से joules में convert करना है, then you have to do what, 1 electron volt will be equal to 1.6 into 10 to the power 19 10 to the power -19 joules. For example, आपके पास आया 50 electron volt. So in terms of joule, this will be 50 into 1.6 into 10 to the power -19 joules. Okay. So please write these things down. If you still have some doubt, please let me know. I will explain further. Let me delete it a bit.
And let me know once you're done writing. Please let me know once you're done. Done. Done? Okay. Try this question. क्या कंपेयर कीजिए इसको, इसको कंपेयर कीजिएगा, ठीक है? I'm giving you guys 2 more minutes. Take 2 more minutes and then we'll do the question. Again, they have asked which of them is not correct. Yeah, correct. That is correct. Very good, Sunit.
Which one of them is not correct लिखा है sir? Which one of them is not correct? See here, guys. This equation here is similar to this equation. The differences in the energy term. Here we have taken electron volt, and here they have taken joules. And this same equation we have used in order to calculate the change in energy. Okay? First statement is equation can be used to calculate change in energy when electron changes orbit, है ना? N1 के लिए कितना होगा और N2 के लिए कितना होगा, जो भी आएगा, you can plug in the values and you can calculate the change in energy. That means this statement is correct. Now see here, for N is equal to 1, N is equal to 1, electron has more negative energy than it does for N is equal to 6. ये सही है, because N is equal to 1 होगा, then this quantity will be larger and this whole thing will be more negative, which means that electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit. Now this statement is not right. If you have negative energy, please याद रखिएगा इस चीज को, negative energy किसको बताती है? It talks about attraction. If you have highly negative energy, that means there is a large attraction. ठीक है? अगर positive energy, that means there will be repulsion. कैसे पता? Coulomb's law है ना, K Q1 Q2 upon R square. अब इन दोनों में आप ले लीजिए सेम चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव. देन बोथ ऑफ दिस नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेगा? रिपल करेगा. पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या करेगा? रिपल करेगा. एंड देन यू विल हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू. बट इफ यू टेक डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तब क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव आया, एंड नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन. Okay, so this B option is the right option, which is the correct, which is incorrect statement. Please write this down. यहाँ पे देखिए, if radius of second Bohr orbit of helium ion is 105.8 picometer, what is the radius of third Bohr orbit of Li2 plus ion? Please write this question. यहाँ पे ऐसे करना आपको, R N1 upon R of N2. ठीक है, डिफरेंट एटम्स के लिए. ये वाला हमने इक्वेशन लिखा था ना, दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड. क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू N1 upon N2 मल्टीप्लाइड बाय Z2 upon Z1 का स्क्वायर. ठीक है, R N1 क्या है यहाँ पे? R N1 इज इक्वल टू 105 ले लीजिए आप, 105.8 पिकोमीटर डिवाइड बाय R N2 निकालना है आपको. दिस विल बी इक्वल टू N1 upon N2. N1 हीलियम का कौन सा ऑर्बिट है? सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, सेकेंड बोर ऑर्बिट. N2 का कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड बोर ऑर्बिट. दैट मींस 3 into Z2. Z2 क्या हो जाएगा? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? 3, राइट? 3 डिवाइड, और हीलियम कितना होता है एटॉमिक नंबर? 2, उसका स्क्वायर. ओके, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 into 9/4. ये हो जाएगा आपके पास 3 बाई, ये 2 सा 3 सा, ये 3/2 आ जाएगा, राइट? 3/2, और इसको डिवाइड कर दीजिए किसके? नहीं,
105.8 into 2 divided by 3 will be equal to Rn2, है ना? One 105.8 divided by Rn2 will be equal to 3 by 2 आ रहा ना, 9 to 2 4. So Rn2 will be equal to 105.8 divided by into 2 divided by 3. Into को हमने 3 लिया है, कुछ गलती हो गई है क्या? जस्ट अ सेकंड गाइस, आंसर नहीं आ रहा. इक्वेशन सही है, R n1 upon n2, n1 upon n2 है, और z है आपका n1 हो जाएगा आपको कितना, सेकेंड बोर ऑर्बिट डिवाइड बाई थर्ड, ठीक है, इंटू 3 बाई 2 का स्क्वायर तो 9, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? अगर R लिथियम का लेते हैं डिवाइड बाई 105.8 तो वो ये कितना आ जाता? लिथियम के लिए लेते हैं हम It should 3 be by 2 into 2 by 3 into 2 by 3. Yeah, tell me, Saf, what am I missing here? it should be n1 by n2 whole square, right? Oh yeah, my bad. Sorry. Sorry. Z का स्क्वायर कर दे रहे हैं हम. ठीक है. So this will be 3 by 2 ना? Yeah, my bad. It will be 3 by 2. It will be 158.7 picometer में होगा. A will be the correct option. This would be like this, 105.8 divided by RLI is equal to N1 है आपके पास कितना, 2 by 3 का whole square, that means 2 into 3 into 2 into 3 multiplied by Z2 upon Z1. Z2 is equal to lithium का होता है 3 divided by 2. 3 3 से 2 2 से कट जाएगा. Lithium will be equal to 105.8 into 3 divided by 2. Right, next question. इसको होमवर्क ले लीजिए.
Moving on, photoelectric effect. Photoelectric effect में क्या होता है? When a light strikes metal surfaces with appropriate frequency, then electron is given out. Okay. Now, if you are giving a photon of E energy, some of it will be used to remove the electron from the metal surface, and then some energy will be used as the kinetic energy of the electron. Some energy will be used as the kinetic energy of the electron. So E of photon will be equal to W plus KE. W is known as the work function or the threshold energy. Threshold energy is that minimum energy which is required to remove the electron from metal surface. Okay. Now, they can ask you regarding kinetic energy. Kinetic energy will be equal to h nu. This is the frequency of the light that you are striking with, minus h mu naught. Mu naught, here mu naught is the threshold frequency. This is corresponding to the work function. Okay. And the maximum kinetic energy will be equal to energy of photon minus the work function. Okay. So write these things. Here we have just converted hc upon lambda. This will be hc upon lambda naught, and then we have converted this value. Write this question as homework. Direct formula वाला सवाल है ये. When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on a surface of a metal, electrons are emitted with kinetic energy इतना. What is the minimum energy needed to remove the electron from metal? ये क्या पूछ रहे हैं? They are asking about the work function. 300 nanometer को आप लोग E is equal to hc upon lambda में plug in कीजिएगा in this value. ठीक है, E upon hc upon lambda आ जाएगा आपके पास. हमने लिखा था एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन माइनस द काइनेटिक एनर्जी. वो पूछ रहे हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू हाउ मच? फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकलेगा? hc अपॉन लैम्डा. और काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है आपको? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास वर्क फंक्शन आ जाएगा. ये पूछ Done everyone? Yes or no? Please tell me. Please let me know once you're done.